ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड, वेलकम टू अवर चैनल एग्जामपुर आईएएस इंग्लिश मीडियम। आप सभी का हमारे परिवार एग्जामपुर में स्वागत है। सो जल्दी जल्दी सेशन के सभी बच्चे जुड़ जाएं। टुडे वी आर गोइंग टू प्रैक्टिस एसे ऑन नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। तो जल्दी जल्दी सभी बच्चे जुड़ जाएं। इज एवरीथिंग इज ओके? वॉइस क्वालिटी एंड एवरीथिंग जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए सभी चीजें ओके हैं, सो दैट वी कैन स्टार्ट अवर सेशन। चलिए जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। वेलकम निकी, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? देखिए आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट है ये जो चीज आज जो हम लोग ऐसे राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे ना, नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। ये काफी इंपॉर्टेंट है फॉर इफ यू कंसीडर फ्रॉम द एस्पेक्ट ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट्स। नोइंग योरसेल्फ, knowing yourself is the beginning of wisdom, ठीक है ना? knowing yourself is the beginning of wisdom, ऐसे, ठीक है? तो जल्दी से सभी बच्चे जुड़ जाएं। वेलकम, सो वॉइस इज क्लियर, ओके। वेलकम धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी, यू फाइन। एरिस्टोटल की लाइन है, ओके। तो दिस लाइन इज बीइंग कोटेड बाय एरिस्टोटल। ये किसके द्वारा कोट किया गया है? ये आपके जो है एरिस्टोटल के द्वारा कोट किया गया है, एरिस्टोटल के द्वारा कोट किया गया है। सो नाउ वी हैव टू डू द क्रिटिकल एनालिसिस कि व्हाट डज दिस कोट मींस। इस कोट को आपको डिकोड करना है। पर सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल जो चीज होती है वो होता है इसको डिकोड करना, ताकि जब आप इसको अच्छी तरीके से डिकोड कर लीजिएगा देन ओनली यू कैन राइट समथिंग अबाउट इट। लेकिन अगर आप इसको मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं तो आप कितना भी लिखिए तो नंबर विल बी अराउंड 22 और या फिर 15 नंबर भी मिल सकते हैं। तो अभी मुझे ये बताइए इसका मतलब क्या है, व्हाट इज द मतलब हाउ यू आर गोइंग टू इंटरप्रिटेट, किस प्रकार से आप इसे समझ सकते हैं। इंटरप्रिटेशन, बताइए। नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। जल्दी से मुझे जल्दी से सभी बच्चे जो है निकी से शेयर कर दीजिए जल्दी जल्दी, ताकि और भी बच्चे जुड़ जाएं। एंड मुझे बताइए इसका मतलब क्या है। नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। एक एग्जांपल मैं बता रहा हूं कि जो भी बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे सिंसियरली यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपने अपने अंदर कुछ तो देखा होगा तभी आपने यूपीएससी एग्जाम चुना है। आप सभी को पता है कि यूपीएससी जो इट इज कंसिडर्ड एज मदर ऑफ ऑल द एग्जामिनेशन, इट इज द टफेस्ट एग्जामिनेशन, ठीक है ना? अपार्ट फ्रॉम दैट द सिलेबस, इफ यू आर गोइंग टू कंसिडर द सिलेबस, तो बाकी वनडे एग्जामिनेशन इसकी सिलेबस भी काफी ज्यादा है। इवन फ्रॉम द स्टेट पीसीएस इसकी सिलेबस काफी ज्यादा है, बट स्टिल एंड द पॉसिबिलिटीज ऑफ गेटिंग सिलेक्शन इज वेरी लोअर, बहुत ही कम पॉसिबिलिटीज है। सो फिर भी आप जो है इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। ऐसा क्यों? इस एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, दैट मींस आपको कुछ ना, आपने स्वॉट एनालिसिस किया होगा, स्ट्रेंथ वीकनेस एनालिसिस किया होगा, आपके अंदर कुछ एट्रीब्यूट्स मिले होंगे, तभी आपने इस एग्जाम को सिलेक्ट किया होगा। जैसे अगर निकी की बात करूं तो उनको पता है कि चलो ठीक है, एक कांस्टेंट है कि सी इज मेरिट, सी हैव टू लुक आफ्टर हर हाउसहोल्ड वर्क, लेकिन उनको पता है कि आई एम वेरी मच डेडिकेटेड, मैं डेडिकेटेड हूँ, मुझे सिर्फ जो है कुछ 3-4 घंटा अपने घर परिवार को देना होता है, बाकी मेरे पास जो 10-12 घंटा बचते हैं उसमें तो 9 घंटा मैं पक्का दे सकती हूँ। ये उनके अंदर जो है एट्रीब्यूट दिखा होगा। You sir only speak English, okay, not an issue if you are able to comprehend what I can speak, then not an issue. So मैं क्या बोला था, what I was stating, suppose Nikki after marriage also she have decided to go for UPSC, that means she have done the SWOT analysis of herself, है ना, and she has observed that she is having certain attributes like first of all dedication, apart from that she knew that she मतलब शादी के बाद जो है, अगर इंडियन ट्रेडिशंस की बात करें तो ज्यादा घूमना फिरना नहीं, डोंट थिंक ज्यादा घूमना फिरना नहीं होता है, सो इट्स बेटर टू एंगेज आवरसेल्फ इन स्टडीज। उसके बाद जो व्हेन इट कम्स टू स्टडी शी माइट हैव एनालाइज्ड कि चलो ठीक है, राइट फ्रॉम माय चाइल्डहुड जितना मैं पढ़ती हूँ उससे ज्यादा मैं इल्ड करती हूँ, ठीक है, शी इज हैविंग अ लर्निंग कैपेबिलिटी, ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट इफ यू कंसीडर अदर फैक्ट्स, तो आप कंसीडर कर सकते हैं कि चलो मैं नोट्स बना सकती हूँ, ओके। इवन उन्होंने सोचा होगा कि कुछ ना कुछ, अगर हम बात करें तो डिजिटल रिवोल्यूशन की बात करते हैं, इवन आफ्टर कोविड-19 की बात करते हैं, तो एजुटेक कंपनी जो है दे हैव ग्रोन एंड उनको पता है कि चलो नाउ it's very difficult to go for Delhi and start coaching from there, but due to the edutech revolution she can start preparing from home itself,
by watching the lecture, अभी देख रहे हैं आप लोग, ठीक है. So these are the factors, these are the certain attributes which CA must have analyzed after going for UPSC. Am I right? ऐसे तो नहीं कि if every you are not going to emulate what others are doing. आपने ये तो नहीं देखा कि चलो बाकी बच्चे if they are preparing for UPSC, she should also prepare. ऐसा अगर करेंगे then definitely वो क्या है, it's a failure. She must have done the SWOT analysis after analyzing all the attributes, all the potentials, all the requisites that she have decided to go for UPSC. Is it okay? So that means what? Knowing, इसको कहते हैं knowing yourself is the best form. Knowing yourself is the beginning of wisdom. That means she must have known herself. She must have known what are the advantages, what are the disadvantages, what is her potential, and after that she has decided to go for UPSC. That's a wisdom. That's a wisdom. Is it okay? ऐसा तो नहीं है कि एग्जाम्पुल आईएएस जो है, एग्जाम्पुल आईएएस इंग्लिश मीडियम, दे आर प्रोवाइडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग ऑन द यूट्यूब चैनल. सो घर में बैठ के क्या करना है, चलिए लेक्चर देख लेते हैं. ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है. इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं knowing yourself is the best form of, is the beginning of wisdom. Suppose if you want to quote another example, if you want to quote another example, so you can quote the example of Max Planck. You can quote the example of Max Planck, the father of quantum physics. He was advised by his teacher, he was advised by his tutor not to do PhD from physics department, because his teacher was stating that now it is very difficult to go for a thesis, because सारी चीजें, everything has been discovered, invented from physics. But Max Planck ने क्या reply किया? He replied that, sir, I do not want to pursue physics because I want to discover something, I want to invent something. Just my personal interest, my personal love towards the subject जो है, because of this only I want to pursue PhD right at this juncture. लेकिन उनको पता था, from inner heart he knew it very well that I have a good command over the physics, I have a good interest with the physics, and I have a great love for this subject. इसीलिए जो है after few years he discovered quantum physics, a new era in physics. क्यों? कि उसको पता था, he did the SWOT analysis of himself rather than listening to his teacher. He has done the SWOT analysis over himself. अगर मुझसे पूछा जाए what is my strength, I knew it better. अगर मुझसे पूछा जाए what is your weakness, I knew it better. है ना, उसने किया था. Another example, अगर हम नेचर की बात करते हैं, सपोज फ्रॉग की बात करते हैं, तो फ्रॉग हैज द कैपेबिलिटी टू अडैप्ट on the different ecosystem where the temperature variations are available. Suppose मान के चलिए आप फ्रॉग लेते हैं, if you are taking फ्रॉग लेते हैं, आप फ्रॉग लेके किसी गर्म पानी में डाल देते हैं, गर्म पानी में जो है आप डाल देते हैं. निकी, have you shared the session? Have you shared the session? Please do let me know. Dharmender, is it okay? Kindly let me know. If you want the session to be completed in English, don't worry, the session will be completely conveyed in English. But we used to be bilingual just because कि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छा समझ में. Otherwise we can be. Otherwise, if you want, you will get the lecture completely in English. चलिए, yeah, okay. The other example what I want to quote, the frog की बात करते हैं. Frog is having the tendency that it can adapt to the different ecosystem where there is temperature variation. तो आप क्या करेंगे? Take a frog and put it into the water, start heating it. तो frog क्या सोचेगा? चलो टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर की बात करेंगे, टेम्परेचर आपका ज्यादा हो रहा है, तो फ्रॉग अपना कैपेबिलिटी बढ़ाएगा, अडेप्टेबिलिटी बढ़ाएगा. लेकिन धीरे धीरे क्या होगा? टेम्परेचर जो है, जो बॉइलिंग टेम्परेचर पे आ जाएगा, और जब उसको लगेगा फ्रॉग को कि इट इज वेरी डिफिकल्ट टू सर्वाइव at that ecosystem, he will try to jump, but at that time the frog cannot jump. वो frog कूद नहीं पाएगा, because the frog has utilized all his internal strength to survive in the temperature variation, to adapt to the temperature variation. अगर उसको लगा था कि टेम्परेचर जो है काफी तेजी से बढ़ रहा है, it was better to jump out, लेकिन उसने जो है अपने वीकनेस पे ध्यान दिया. स्ट्रेंथ ये था कि जंप कर सकता था, वीकनेस ये था कि चलो ठीक है, आई एम अडेप्टेबल टू दिस टेम्परेचर वेरिएशन, लेट मी अडेप्ट, देखते कब तक हो पाता है. फ्रॉग की डेथ हो जाती है. तो इसीलिए मैंने कहा है कि knowing yourself is the beginning of all wisdom. If you want to quote, so we have quoted examples like frog. Apart from that, we have quoted example of Max Planck. You have quoted example of UPSC aspirant. If you go deep into the history, you will see, आपको देखने को मिलेगा कि you will see that हिस्ट्री में भी बहुत सारे आपको ऐसे एग्जांपल्स मिल जाएंगे. जैसे आप एग्जांपल कोट करते हैं महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी न्यू इट वेरी वेल दैट द ओनली वे टू गेट इंडिपेंडेंस इज नॉन वायलेंस, अहिंसा. ठीक है ना, इट्स वेरी
वो अगर फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली वी विल गेट द इंडिपेंडेंस। वो ऐसा उनको पता था, he did the SWOT analysis and finally we have received the independence। अगर आप जो है, इवन इफ यू कोट द एग्जांपल ऑफ चाणक्य ही वाज बीइंग इंसल्टेड बाय धनानंद, है ना। इफ यू कोट द एग्जांपल ऑफ चाणक्य, ही वाज बीइंग इंसल्टेड बाय धनानंद। तो एट द वेरी जंक्चर ही कुड हैव अटैक्ड धनानंद, बट ही वाज क्वाइट अवेयर दैट इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटैक धनानंद, एज ही वाज क्वाइट क्रूअल। अपार्ट फ्रॉम दैट, ही वाज वेरी मच पावरफुल। सो व्हाट ही डिड, he started venturing in the different states to get a student that is capable of defeating धनानंद। और उनको कौन मिला है? चंद्रगुप्त मिलता है। He started training the चंद्रगुप्त की ट्रेनिंग होती है। ट्रेनिंग के बाद डिफरेंट टेस्ट होता है, एंड when he was completely satisfied that now चंद्रगुप्त मौर्य is having the potential to defeat धनानंद, तब जाके जो है वो धनानंद पे अटैक करता है। तो lot of example is there where you can quote this, ठीक है ना। तो this is the most important aspect of this essay। Is it clear to everybody? बताइए। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, DKS, Niki ji, is it clear what you have stated? Are you capable of interpreting what the essay means to you? Let me know so that we can start our essay writing. Do let me know. देखिए, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, लिसन टू मी, आप लोग अगर जो भी यूपीएससी, ध्यान से सुनिएगा, जो भी यूपीएससी एस्पिरेंट जो है, जो यूपीएससी की तैयारी जो है हमारे चैनल से करते हैं, ठीक है ना। ऑन संडे की अगर हम बात करते हैं तो संडे में थोड़ा सा टाइम फ्लक्चुएशन होता है। जैसे कि जनरली बात की जाए तो मेरी एसी राइटिंग की क्लासेस 8 बजे से होती है। तो संडे को जो हम लोग क्लासेस कब करते हैं? संडे को हमारी क्लासेस जो होती है थोड़ी सी 6 बजे हो जाती है, ठीक है ना। सो जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इट्स देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मॉर्निंग में जब सो के उठते हैं तो काइंडली हैव ए लुक ऑन द चैनल सो दैट दे कैन, उनको समझ में आ जाएगा कि आपके कब कौन कौन से लेक्चर है, ठीक है ना, कब को कौन कौन से लेक्चर है। एंड ऑलवेज ट्राई टू वॉच द लेक्चर इन द लाइव सो दैट वी कैन इंटरेक्ट। सपोज आप रिकॉर्डेड फॉर्म में देखते हैं, यू कांट इंटरेक्ट विथ मी। इफ देयर इज डाउट, दैट डाउट विल बी परसिस्टिंग, है ना। बट इफ अगर आप अभी क्लासेस देख रहे हैं, लाइव क्लासेस देख रहे हैं, कुछ भी डाउट होता है, यू कैन इंटरेक्ट विथ मी so that the doubt can be addressed। So let us start the session। I am waiting for our student to join the session। याद रखिएगा इस तरीके से चीजों को देखिए। when suppose if you want to go for the philosophical essay, the most important aspect is to decode it। और जब decode करते हैं, if you are unable to decode in a literal sense, what you can do, you can just decode it by quoting certain examples। आप जो है आप किसी एग्जाम्पल से कोट कर सकते हैं। इफ द एग्जाम्पल जो है, अगर एग्जाम्पल की बात करेंगे, अगर एग्जाम्पल जो अगर इसके साथ मैच कर रहा है, दैट मीन्स यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन। और उसके बाद अगर एसे राइटिंग स्टार्ट करते हैं, डेफिनेटली एटलीस्ट वॉट एवर मे बी द सर्कमस्टांसेस, हाउ यू, मतलब कितना भी अगर पोअरली प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं, डेफिनेटली यू विल गेटिंग 45। बट अगर आप इफ यू फेल टू डिकोड द एसे, तो आपको मान के चलिए कि आपको जो है यू विल बी गेटिंग 20। तो चलिए लेट अस स्टार्ट आवर एसे राइटिंग विदाउट वेस्टिंग टाइम। ठीक है, कॉपी पेन सबके पास है? धर्मेंद्र, कॉपी पेन है आपके पास? चलिए, अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आप इंट्रोडक्शन जो है कई तरीके से आप ऐसे को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है ना। कुछ आपका कुछ ये देयर इज नो बाउंडेशंस। यू कैन स्टार्ट द एसे विथ योर कोट्स, यू कैन स्टार्ट द एसे विथ सर्टेन एग्जांपल्स, यू कैन स्टार्ट, जैसे मैंने बताया था कि वी हैव कोटेड द एग्जांपल ऑफ मैक्स प्लैंक। सो ये क्या एक तरह का केस स्टडी भी है। यू कैन स्टार्ट द एसे कोटिंग द मैक्स प्लैंक कि हाउ वी डिस्कवर्ड क्वांटम फिजिक्स after being requested by the teacher not to take those subjects because it was his SWOT analysis in which he discovered that he has a great love for the subject and he can pursue something। So you can start the essay by quoting the example of Max Planck। Apart from that, in general, let us आपको हमें कोशिश करना चाहिए तो मेक इंट्रोडक्शन जो होना चाहिए, इट शुड बी अ बिट इंटरेस्टिंग सो दैट अगर कोई इंट्रोडक्शन पढ़ता है तो उसको थोड़ा फील आता है, ही कैन गो थ्रू द एसे और आपको अच्छा नंबर मिल जाएगा। तो व्हाई कैन वी स्टार्ट द एसे विथ ए फ्रॉग? सो लेट अस स्टार्ट द एसे विद एग्जांपल ऑफ फ्रॉग। नोइंग योरसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, ठीक है ना। नोइंग yourself
is the beginning of wisdom. Is the beginning. Knowing yourself is the beginning of wisdom. Is the beginning of wisdom. Is the beginning of wisdom. ठीक है, चलिए. So we will starting with the example of frog. So put a frog in the water. आप लिख सकते हैं. Put a frog in the water, and start heating the water. Start heating the water. Frog sensing the temperature rise, it will try to adjust. Frog after sensing temperature rise, will try to adjust again if the temperature is raised. If the temperature is raised, frog will get accommodated. Frog will get accommodated. But when the temperature is about to reach, when the temperature is about to reach boiling point, frog will try to jump out of the vessel. Frog will try to jump out of the vessel. Frog will try to jump out of the vessel. But he can't. थैंक यू सर. मिलके कॉलर पे लगा लीजिए, थोड़ा वॉइस लाउड हो जाएगा. सर माइक को कॉलर पे लगा लीजिए. अच्छा, कॉलर पे लगा लीजिए. अच्छा, नाउ इट्स ओके. नाउ इज इट ओके. चलिए, बोलता ना सेशन शुड बी अ बिट इंटरेक्टिव वन. कुछ हम कहें, कुछ आप कहें, ये सिलसिला हमेशा चलता रहे. पता नहीं सिलसिला स्टार्ट कब होगा. चलिए, मैं तो सिलसिला चलाने को तो शुरू हूं, सिलसिला स्टार्ट कब होगा पता नहीं. चलिए, but when the temperature is about to reach the boiling point, frog will try to jump out of the vessel, but the frog failed. Failed to rescue itself. Reason being, it has utilized all its energy. It has utilized all its energy in adjusting itself in the temperature variation. Okay, has the frog sorry, if the frog has prior knowledge that he could not jump
when the temperature will reach boiling point, frog could have survived. So it, Aristotle rightly quoted. Aristotle rightly quoted that knowing yourself is the beginning of wisdom. Knowing yourself is the beginning of wisdom. ठीक है? Is it okay? Okay, not an issue. ठीक है? चलिए. So let me read it once. What I have written. Put a frog in the water and start heating the water. Frog, after sensing the temperature rise, will try to adjust. Again, if the temperature is raised, frog will get accommodated. But when the temperature is about to reach boiling point, frog will try to jump out of the vessel. But the frog failed to rescue itself. Reason being, it has utilized all its energy in adjusting itself in temperature variation. If the frog has prior knowledge that he could not jump when the temperature will reach boiling point, the frog could have survived. Knowledge में होता तो frog could have survived. So Aristotle rightly quoted that knowing yourself is the beginning of wisdom. ठीक है? Is it okay? So once it is written, Dharmendra Kumar Sharma ji, once it is written, please do let me know so that we can change the slide. देखिए ऐसे में क्या है, do not think of if you are having good command over the flowery language, if you are having good command over the English, you can use flowery words, you can use good words, ठीक है. But ऐसा कुछ सोचने की जरूरत नहीं. If your English is weak, you can use just NCERT language to present the essay. Yeah, in essay जो है continuity should be maintained. Example you can inculcate different examples, ठीक है. गुड इवनिंग गणेश जी, यू आर लेट बाय 10 मिनट्स, 28 मिनट्स. आर्मी डिसिप्लिन लेके आना पड़ेगा आप सभी लोगों के लिए. बताइए. चलिए. Okay, let me change. ठीक है. So first paragraph is done. Now we have to continue. Nitesh ji, good evening. Class, you guys are late by 28 minutes. It's a request to everyone. Kindly in the morning itself you try to watch on our channel what are the lectures, what are the timing, and as per your convenience जो होता है जो है आप be on the time, because 28 minutes have been elapsed. पास हो चुके हैं. अगर आप बिगनिंग में ज्वाइन करते हैं, बिकॉज बिगनिंग काफी मैटर्स करता है ऐसे राइटिंग के लिए. मैंने आप लोग कई बार बताया, बिकॉज वी हैव टू डिकोड द कोड. दैट्स द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ योर एसे. रेस्ट तो आप कर सकते हैं, ठीक है ना. चलिए. विजडम इज अ क्वालिटी दैट इज हाई इन डिमांड बट रेयर टू फाउंड. विजडम is a quality that is high in demand, but low in supply, ठीक है ना. but low in supply, ठीक है. Okay. The art of analyzing our capabilities, the art
the art of analyzing our capabilities, effort, our capabilities, efforts, deeds, our strength and weakness is the most important aspect, is the most important aspect of survival, has the frog realized if the frog has this wisdom, if the frog has this wisdom, if the frog has this wisdom to realize that he cannot get out of the water, he can't get out of water, he could have jumped in the beginning itself. He could have jumped in the beginning, in the beginning itself. ठीक है सर, मैं ज्वाइन नहीं किया था, सो आई हैव नो आइडिया दैट टुडे इज क्लास 6 में. ओके, कोई इशू नहीं है. ठीक है, सभी लोग जो है क्लासेस अपना टाइम से क्लासेस अटेंड किया कीजिए. सभी लोग जो है नोट जरूर बनाया कीजिए एसी का. आपको पता है कि मेरी शायद ये 12वीं एसी राइटिंग का क्लासेस है. इतनी एसी राइटिंग की क्लासेस कभी नहीं होती है. ठीक है, नितेश जी, आर यू देयर इन द क्लास? गणित, आर यू देयर इन द क्लास? धर्मेंद्र, आर यू देयर इन द क्लास? एक बार जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए. चलिए जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कौन कौन अभी क्लास में है. मैं चेक करना चाहता हूं. जस्ट वांट टू चेक इफ ए फैकल्टी इज अवेलेबल टू टेक द योर, बिकॉज आई एम गेटिंग मैसेज फ्रॉम 2 of my aspirants. Sir, please do not stop your essay writing classes. मेरी जो है they are quite confident that they are in the next time they are going to write prelims examination and they will succeed also. Next time जो है हम लोग कह रहे हैं कि sir this time because of 2 or 3 numbers they are unable to qualify prelims. Next time it's definite that they are going to qualify the prelims. So ये जो अभी जो window period they want to build their mains, इसलिए I'm continuously getting a message. So that's why I've decided कि चलो आप लोग एसी राइटिंग जो है सभी का हो जाए. चलिए, गणित इज अवेलेबल. नितेश, आर यू देयर इन द क्लासेस? धर्मेंद्र, जस्ट वांट टू नो अभी बच्चे कौन कौन से हैं. ठीक है, चलिए, तो हमने यहाँ पे लिखा है विजडम इज अ क्वालिटी दैट इज हाई इन डिमांड बट लो इन सप्लाई. द आर्ट ऑफ एनालाइजिंग आवर कैपेबिलिटीज, एफर्ट, डीड्स एंड स्ट्रेंथ, our weakness is the most important aspect of survival. If the frog has this wisdom to realize he cannot get out of the water, he could have jumped in the beginning itself and survived. ठीक है. Apart from nature, अभी नेचर की बात की थी. Apart from nature, if we delve ourselves, if we delve ourselves into the history, if we delve ourselves in the history, we will see great personalities that have literally changed the perspective, changed the
the perspective of the world, change the perspective of the world just by knowing themselves, just by knowing themselves and their inner strength, themselves and their inner strength. देखिए, now from the nature, now गणित की प्लेलिस्ट हैज बीन क्रिएटेड। प्लेलिस्ट जो है हमारे चैनल पे जाइएगा, एसे राइटिंग की प्लेलिस्ट क्रिएटेड, आप उसे देख सकते हैं। कल मैंने चेक किया था, इंटरनल सिक्योरिटी और एसे राइटिंग की जो है प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, तो आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो अब आप देख सकते हैं कि नाउ फ्रॉम द नेचर वी वांट टू मूव टुवर्ड्स द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। सो हम अभी क्या करेंगे, दोनों पैराग्राफ ज्वाइन करने की कोशिश करेंगे, सो दैट इट अपियर्स टू बी कंटिन्यूअस। इसलिए मैंने यहां लिखा है कि apart from the nature, if we delve ourselves in the history, we will see that great personalities that have literally changed the perspective of the world just by knowing themselves and their inner strength. चलिए, जल्दी से नोट डाउन कीजिए सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे नोट डाउन करें। I join the class, sir. Okay. धर्मेंद्र कुमार शर्मा जी अवेलेबल, गणित कुमार जी अवेलेबल, निकी जो है, चलिए ठीक है। देखिए, सिंसियरिटी जो होता है ना, जो सिंसियरिटी कार्ड जो होता है, रिमेंबर वन ऑफ माय वर्ड, सिंसियरिटी कार्ड जो होता है ना, मींस हाउ मच यू आर सिंसियर, इट्स वेरी यू कैन से दैट इट वन ऑफ द रेयरेस्ट क्वालिटी, रेयरेस्ट एट्रीब्यूट्स दैट यूपीएससी एस्पिरेंट हैव। If you are attending the classes once in a while, that means then there is no use of watching the lecture. आप अगर महीने में एक बार लेक्चर देखते तो उससे क्या फायदा है? कोई फायदा नहीं है। It's better not to watch the lecture. लेकिन if you are sincere, if you are having that attitude, if you're watching the lecture on a regular manner, apart from that, if you are maintaining the notes, definitely after certain time, after 1 year, आप जब एनालाइज करेंगे, you could have see that you have prepared all the notes. आपके पास सभी के नोट्स जो है इन सिंक्रोनाइज्ड वे में है, एंड तब आपको एहसास होगा कि I did something, I have invested my time. No doubt मेरे पास जो है पैसा नहीं था, I was not having the money, I was financially very weak, but one of the literal aspect, one of the greatest aspect that was having is my presence, and apart from that my sincerity card, जिससे कारण से जो है I have completed all my notes. जहां भी हम क्लासेस अटेंड, all my notes. Now I don't want any coaching. Now I need to prepare myself. So such type of sincerity card should be there with the UPSC aspirants. If you, ये हमेशा याद रखिएगा, अगर लेक्चर देखते हैं तो यू मस्ट वॉच द लेक्चर ऑन रेगुलर बेसिस। मेरा क्या है, तो मेरा तो लेक्चर, माई रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू डिलीवर द लेक्चर, आई विल डिलीवर द लेक्चर, नाउ इट्स अप टू यू गाइस वेदर यू आर यूटिलाइजिंग इट और नॉट। बट यही खराब लगता है कि 1.5 घंटा का जो लेक्चर हम देते हैं, देयर आर फ्यू एस्पिरेंट्स हु आर watching the lecture on a regular basis, rest जो है वो लोग जो है वॉच नहीं करते हैं। तो रिमेंबर दिस थिंग, दे आर जस्ट प्लेइंग विद देयर लाइफ, दे आर जस्ट प्लेइंग विद द यूपीएससी जो है, इट्स नॉट ए गेम। यूपीएससी इज द वन ऑफ द टफेस्ट एग्जामिनेशन, एंड वहां पे जो है अच्छे खिलाड़ी पीछे रह जाते हैं। इवन द आईआईटीएंस, इफ यू गो एंड सी द आईआईटीएंस जो है, दे आर अनएबल टू क्रैक प्रीलिम्स ट्वाइस और थ्राइस। हाँ, जब करते हैं ये, ठीक है ना। नितेश जी, यू आर नॉट देयर इन द क्लासेस फॉर लास्ट 10 minutes, आई वाज ऑब्जर्विंग दैट, जस्ट यू केम नाउ। Don't take my words in the negative sense कि sir is taking a classes. मैं आपको आपका मिरर दिखाना चाहता हूँ। You are a very serious, you are a very sincere aspirants. I knew it very well. We have personally interacted with you. That's why. But आप अगर क्लासेस करते हैं तो be regular in the classes without any interruption. Apart from that, when you enter into classes, just stay in the classes because it's your time. Do not try to waste that time. आपको उस टाइम को वेस्ट करने की जरूरत नहीं। Try to utilize it effectively so that it will be productive. आप क्लासेस देखते हैं, अगर इफ यू आर वाचिंग द लेक्चर फॉर अ ड्यूरेशन ऑफ 1.5 hour, मैं हमेशा असिस्ट करता हूं कि आप सभी के पास नोट बुक होना चाहिए, सो दैट यू आर राइटिंग, सभी चीज को नोट डाउन करते हैं। तब जाके 1 साल के बाद आपको आपकी जर्नी पता चलेगा कि आपकी जर्नी कैसी थी। ठीक है, सो बी रेगुलर इन द क्लासेस एंड अपार्ट फ्रॉम दैट बी प्रिपेयर द नोट्स, तभी जाके यूपीएससी निकलेगा। इस तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है ना। जस्ट ट्राई टू बी रेगुलर इन द क्लासेस, अपार्ट फ्रॉम दैट लेक्चर्स देखिए तो ट्राई टू मेंटेन द नोट्स, अपने नोट्स को मेंटेन कीजिए हमेशा। निकी जो है हमेशा वो ऐसे राइटिंग करके
ऐसे राइटिंग करके शी यूज्ड टू सेंड द नोट्स टू पर्सनल टू मी कि सर आई हैव अटेंडेड योर क्लासेस, और मैं सभी का नोट्स बनाती हूँ इंटरनल सिक्योरिटी का। ठीक है, मैं पढ़ता नहीं हूँ बिकॉज द सेम थिंग हैज बीन स्टेटेड ओवर, व्हाट इज द मींस आई डू नॉट हैव सो मच टाइम कि मैं उसे वापस पढ़ सकूं, बट नोट्स बन रहा है ना, दैट्स वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। इंटरनल सिक्योरिटी का आप जो है यू कैन टेक द नोट्स फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ एंड यू कैन कंपेयर माय नोट्स। जो मार्केट में नोट देखिएगा इट विल बी अराउंड 40 to 50 पेजेस, हार्डली few topics are being covered, rest you have to cover yourself, but मेरे इंटरनल सिक्योरिटी में देखिएगा तो almost 15 to 16 topics are being covered. Now it's up to you whether you're maintaining the notes or not. If you're just watching the lecture also, it's all futile. यूपीएससी है यार, आप लोग यूपीएससी का एक्सपीरियंस है, यू गाइस आर यूपीएससी एस्पिरेंट, आपको वनडे एग्जामिनेशन नहीं प्रिपेयर करिए, प्रिपेयरिंग फॉर द यूपीएससी, यू मस्ट हैव सर्टेन गट्स, यू मस्ट हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स व्हेन यू एंटर इनटू द फेज ऑफ प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी। उसी समय से आपके पास यू मस्ट हैव सर्टेन एट्रीब्यूट्स, कुछ एट्रीब्यूट्स होना चाहिए, पैशंस, परसिवरेंस, डेडिकेशन, ठीक है ना। अपार्ट फ्रॉम बोलते ना, लिसनिंग इज आल्सो वन ऑफ द एस्पेक्ट। इफ समबडी, अगर आपको कोई जो है समबडी, सपोज ये पहाड़ है, ठीक है ना, ये पहाड़ है, आपको इस मंजिल तक, इफ यू वांट टू रीच दिस समिट and if you are moving like this, you are moving like this, you are moving the right direction but your pace, your rate is not okay, and if somebody is pushing you with your words, कोई आपको पुश कर रहा है, कोई someone is motivating with your words, sometimes the motivational can be positive, but sometimes the motivational will be negative, just like I'm taking the classes of you guys, but the theme is somebody is pushing you, कोई आपको पुश कर रहा है so that you can reach the summit। यूपीएससी है यार, खेल नहीं है। कभी आप मार्केट में देखिए, have you ever been to करोल बाग, have you ever been to मुखर्जी नगर, have you ever been to library? The students they are continuously preparing for the UPSC from last 3 to 4 years, but आपको पता है they fail to crack prelims many times। Apart from that, ये बोलिए कि एग्जाम्पल का आप एक अच्छा इनिशिएटिव है कि we are taking आंसर राइटिंग क्लासेस। आप जाके कहीं करोल बाग में जाइएगा, if enter in library you will see that कोई एस्पिरेंट जो है they are been preparing for the UPSC from last 4 years and their just target is to do prelims, so prelims क्रैक करेंगे, then they will start आंसर राइटिंग। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आंसर राइटिंग जो है आपको कंटिन्यूस कराया जा रहा है। एवरी फैकल्टी जो है दे आर डूइंग देयर जॉब्स, लेकिन आप लोग उसे मजाक समझ रहे हैं। क्वाइट सिंपल, देखिए एकदम मैं सिंपल से बता देता हूं, एकदम सिंपल, अच्छा लगेगा तो भी ठीक है, बुरा लगेगा तो भी ठीक है। आप लोग सब जो बच्चे जो एकदम सिंसियर है, परसिवरेंस से, डेडिकेटेड है, एंड जो अपनी नोट्स रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, अपनी नोट्स बना रहे हैं, रेगुलर क्लासेस अटेंड कर रहे हैं, नोट्स नहीं बना रहे तो भी कुछ नहीं होगा। आप एक बार कोई हम लोग कोई मतलब भगवान नहीं है कि एक बार कोई चीज को सुन लिए तो हम लोग चीजों को रिटेन कर सकते हैं। नोट्स बना रहे हैं, और नोट्स बनने के बाद जो आप उसका वीकली बेसिस से रिवीजन कर रहे हैं, वही आपका लास्ट में यूपीएससी क्वालिफाई करेगा। अब आप सोच लीजिए ये क्वालिटीज आपके अंदर है कि नहीं है, उसके बाद अपना डिसीजन ले लीजिए। देखिए एग्जाम बना निकालने के लिए, जब ए निकाल सकते तो बी क्यों नहीं निकालेगा, बी निकाल सकते तो सी क्यों नहीं निकालेगा, लेकिन सभी को ए तो बनना पड़ेगा, सभी को जो है ए का आपका क्वालिटीज उसके एट्रीब्यूट्स तो लेके आने पड़ेंगे। सोचते सोचते पता है लोग सोचते हैं हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा सोचते सोचते 5 साल हो जाता है, कुछ नहीं कर पाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। चलिए, सो व्हाट यू हैव रिटन, wisdom is a quality that is high in demand but low in quality, low in supply. The art of analyzing our capabilities, efforts, deeds, strength and weakness is the most important aspect of our survival. If the frog has this wisdom to realize that he cannot get out of water, he could have jumped in the beginning itself, apart from nature. If we delve ourselves in the history, we will see great personalities that have literally changed the perspective of the world just by knowing themselves and their inner strength. ठीक है, नोट डाउन कर लिया आप लोगों ने, इज इट नोटेड? Why not me also? Nitesh, you are having the potential. See, you have the potential to crack UPSC. ठीक है ना, every aspirants that are dedicatedly watching our lecture, that are devoting 10 hours, ठीक है ना, they can crack UPSC. लेकिन उसके बाद UPSC crack नहीं हो पाता because they are not effective in their classes, they are not effective in making the notes, they are not effective in revising the steps. सिर्फ मूव करने से नहीं होता, you have to move effectively, then only you are able to crack the examination. ठीक है, चलिए, let me change the board. Written,
ठीक है, चलिए। नितेश, ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव जोन, ट्राई टू कम आउट फ्रॉम द नेगेटिव जोन, ठीक है ना। जब हम नेगेटिव सोचते हैं ना, जब नेगेटिव सोचते हैं तो हम लोग नेगेटिव सर्कुलर में एंटर कर जाते हैं। जब नेगेटिव सर्कुलर में एंटर कर जाते हैं, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट। ऑलवेज हैव ए पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स द लाइफ, ठीक है ना। यूपीएससी है, प्रिपरेशन करते हैं, सो इट्स द फेजेस ऑफ लाइफ। समटाइम वी विल बी वेरी मच पॉजिटिव टुवर्ड्स आवर लाइफ, समटाइम वी विल बी वेरी मच नेगेटिव टुवर्ड्स आवर लाइफ। जब नेगेटिव होते हैं, देन वी विल एंटर इनटू द सर्कुलर जोन ऑफ नेगेटिविटी एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कम आउट, बट वी हैव टू कम आउट। दीज आर द फेजेस ऑफ थिंग, फेजेस ऑफ लाइफ। चलिए, सो हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं तो गौतम बुद्ध महावीरा, गौतम बुद्ध महावीरा, these great personalities, these great personalities have inspired countless generation by their teachings, acts, by their teaching acts, etc. Gautam Buddha, they have discovered themselves. They have discovered themselves not by external forcing, but not by external forcing, but by meditating in the deep silence, but by meditating in the deep silence. They have discovered themselves not by external forcing, but by meditating in the deep silence, where they have analyzed the different aspects of life, where they have analyzed different aspects of life and came to the conclusion which they have included in their teaching, which they have included in their teaching. So it clearly depicts that knowing oneself is the beginning of wisdom, When Siddhartha knew himself, he became Gautam Buddha. When Siddhartha knew himself, when Siddhartha knew himself, he became Gautam Buddha. He became Gautam Buddha, ठीक है ना. He became Gautam Buddha.
which still who is still inspiring youth to take a rational approach towards the life, to take a rational approach towards the life, towards life, ठीक है, towards life. Is it okay? चलिए, क्लियर है? तो हमने यहाँ पे लिखा है गौतम बुद्ध महावीरा, दिस ग्रेट पर्सनैलिटीज have inspired countless generation. Their teaching by their teaching etc. They have discovered themselves not by external forcing but by meditating in the deep silence, where they have analyzed the different aspects of life and come to conclusion which they have included in their teaching. So it clearly depicts that knowing oneself is the beginning of wisdom. When Siddhartha knew himself, he became Gautam Buddha, who was still inspiring youth to take a rational approach towards life. Written? सभी बच्चे लिख लिए? जल्दी से बताइए. जल्दी से नोट करें सभी बच्चे, जल्दी से सभी बच्चे नोट करें. अभी मैंने इतना क्लास लिया, फिर बच्चे सब चले गए. जल्दी से सभी नोट करें. एंड वंस इट इज नोटेड प्लीज डू लेट मी नो. गणेश जी, नितेश जी, धर्मेंद्र जी, निकी जी, जो भी बच्चे हैं, वंस इट इज नोटेड प्लीज डू लेट मी नो. देखिए, अगर हम बात करेंगे knowing oneself is the beginning of wisdom. Even if you quote the example of great warriors, when they have knew themselves whether they are having the potential or not, then they only started waging the war against the enemy. If you took the example of Chanakya, अगर चाणक्य की बात करते हैं, चाणक्य after analyzing the Dhananand power, he tried to bring, ठीक है ना, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फिर उन्होंने जो चंद्रगुप्त को उस काबिल बनाया ताकि वो धनानंद से फाइट करे, और तब जाके हुआ, तब जाके फाइटिंग, तब जाके चंद्रगुप्त जो है जीतता है. चलिए जल्दी से नोट डाउन कीजिए सही बच्चे. ठीक है, चलिए ठीक है. Similarly, if you study the stories of similarly if we study the lives of great warriors, we will see that they were able to conquer the world. They were able to conquer the world because they knew themselves, their strength, weakness, knew themselves, their strength, weakness and all, ठीक है ना, and all, ठीक है ना. Is it okay? Yes sir. ठीक है. Chanakya did not attack Dhananand army till he was confident. Chanakya did not attack Dhananand army till he was confident
till he was confident, because he was not till he was confident that Chandragupta could defeat him. When Chandragupta Maurya was completely trained by when Chandragupta was fully trained by him and he realized that now it's the time. Now Chandragupta can defeat him. Now Chandragupta can defeat him. Then only Chandragupta then only war was being declared. War was being declared, and Chandragupta won. War was being declared, and Chandragupta won, and Chandragupta won. ठीक है, Chandragupta won. Is it okay? इवन आप यहां पे देख सकते हैं, even knowing oneself is the best form of wisdom can be, even आप लिख सकते हैं, even knowing oneself is the best form of wisdom, can be depicted from British rule, and India's struggle from freedom, and India's struggle for freedom. ठीक है, clear? So let me read it once. Similarly, if we study the lives of great warriors, if we see that they were able to conquer the world because they knew themselves, their strength and weakness and all. Chanakya did not attack Dhananand's army till he was confident that Chandragupta could defeat him. When Chandragupta was fully trained by him and he realized that now Chandragupta can defeat him, then only war was being declared and Chandragupta won. Even knowing oneself is the best form of wisdom can be depicted from British rule and India's struggle for freedom. जल्दी से नोट कीजिए, and once it is noted, please do let me know. Once it is noted, please do let me know. जल्दी से नोट करके मुझे बताइए. ठीक है, चलिए अब हम ब्रिटिश रूल के बारे में बात करते हैं. नोट हो गया? चलिए, probably the best example, probably the best example of knowing the strength and ruling the world, of knowing strength and ruling the world is British rule. Okay, British rule. British were quite aware
of their bargaining power, of their bargaining power, of their bargaining power, of their bargaining power, and at the same time, knowing the strength of their opponents, at the same time knowing the strength of their colonies, they have entered India as a trader of their colonies, they have entered India as a trader, they have entered India of their colonies, they have entered India as a trader, and slowly and as a trader and slowly and gradually they subjugated India as their colonies, they subjugated India as their colonies, and they become the master, ठीक है, चलिए कॉलोनीज लिख दीजिए। हमने ब्रिटिश की भी बात कर ली। ब्रिटिश को पता था कि जो है हम वो जो है धीरे धीरे इंडिया को कॉलोनीज में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो उनको स्टार्टिंग से पता था, इसलिए उन्होंने जो उसको कॉलोनी में कन्वर्ट कर लिया, ठीक है ना। इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है प्रोबेबली द बेस्ट एग्जांपल ऑफ नोइंग स्ट्रेंथ एंड रूलिंग द वर्ल्ड, probably the best example of knowing strength and ruling the world, and ruling the world is the British rule. British were quite aware of their bargaining power, and at the same time knowing the strength of the colonies, they have entered India as a trader, and slowly and gradually they subjugated India as their colonies. ये क्यों पॉसिबल था? बिकॉज दिस वॉज बीइंग पॉसिबल बिकॉज दे आर क्वाइट अवेयर ऑफ देयर स्ट्रेंथ। ठीक है, क्लियर हो? ठीक है, चलिए। दिस हैपेंड बिकॉज, आप लिख सकते हैं दिस हैपेंड बिकॉज दे वर दिस हैपेंड because they knew themselves, because they knew themselves। ठीक है, ओके। ठीक है, चलिए। अब यहां पे आप ये लिख सकते हैं द ब्रिटिश रूल वॉज बेस्ड इन इंडिया ऑन ब्रिटिश रूल वॉज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल fact that Indians cannot govern themselves. Indians cannot govern themselves. Indians cannot govern themselves. But great leaders like Raja Ram Mohan Roy, Mahatma Gandhi, Lala Rajpat Rai,
लाजपत राय, ठीक है ना, लाजपत राय brought the new revolution in the country, brought new revolution in the masses, brought new revolution in the masses, masses by ठीक है, अब आप लिख सकते हैं ओके। सो ब्रिटिश रूल की बात करें, ब्रिटिश रूल वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल फैक्ट दैट इंडियंस कैन नॉट गवर्न देम। आपने मूवी में देखा होगा इंडियन जो है, ओके मृदुल जी आप लेट हो गए, आज मेरी क्लासेस 6 बजे से थी, आप नोट डाउन कर लीजिएगा। सो ब्रिटिश रूल वाज बेस्ड ऑन द आइडियोलॉजिकल फैक्ट दैट इंडियंस कैन नॉट गवर्न देमसेल्फ बट ग्रेट लीडर्स लाइक राजा राम मोहन रॉय, महात्मा गांधी, लाला लाजपत राय बॉट न्यू रिवोल्यूशन इन द मासेस, ठीक है ना, बॉट न्यू रिवोल्यूशन इन द मासेस। किस प्रकार से? by knowing the masses about their rich heritage culture, by teaching the masses, by teaching masses about rich heritage culture, about our civilization, about our rich heritage, our potential, and it is because of this, and it is because of this mass movement started against British, and finally India wants independence, ठीक है ना। हमने इंडिपेंडेंस की भी बात करें, ब्रिटिश रूल की बात करें तो ब्रिटिश रूल जो है एक आइडियोलॉजिकल फैक्ट बना हुआ था कि जो इंडियन जो है वो गवर्न नहीं कर, अपने आप को गवर्न नहीं कर सकते थे। लेकिन राजा राम मोहन रॉय की बात करें, महात्मा गांधी की बात करें, लाला लाजपत राय की बात करें, दादा भाई नौरोजी की बात करें, ये लोग एक नया फाउंडेशन, न्यू रिवोल्यूशन मासेस को प्रोवाइड किए कि जब मासेस को बताया कि उनकी रिच हेरिटेज कल्चर, उनके सिविलाइजेशन के बारे में, उनके अंदर भी लगा कि हमारे अंदर भी पोटेंशियल जो है, हम जो है इनको आराम से हरा सकते हैं। देन मास मूवमेंट स्टार्टेड एंड इट इज बिकॉज ऑफ द मास मूवमेंट कि इंडिया जो है दे वन फ्रीडम, इंडिया वन फ्रीडम। तो जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए इसे। अब हम बात करेंगे साइंटिफिक फील्ड में, इवन दिस केस इज एप्लीकेबल इन द साइंटिफिक फील्ड आल्सो। जल्दी से नोट डाउन कीजिए। चलिए नोटेड। अब हम बात करेंगे जो मैक्सवेल का हम लोग कंसेप्ट को डिस्कस किए थे वो यहां पे लिखेंगे। इवन दिस केस इज एप्लीकेबल इन द फील्ड ऑफ, in scientific field also, even this is applicable in the scientific field also, in the scientific field also, Max Planck was been advised by teacher Max Planck जो है, Max Planck was being advised by his teacher not to do PhD in physics, not to, or just a moment, PhD नहीं था, just let me a moment. Even Max Planck was being advised by his teacher not to take physics for his highest, not to take
physics, not to take physics for his higher studies, as almost everything has been invented and discovered in physics, as almost everything has been discovered and invented in physics, but Planck replied that he want to pursue physics not because he want to discover something, but because he had a great love for his subject. But Planck replied that he wanted to pursue physics due to his physics because he is having great love for this subject, great love for this subject, and after few years he bought a new revolution. He bought a new revolution in this subject, new revolution in this subject, when he introduced quantum physics, because he knew himself and his passion for physics, ठीक है, his passion for physics. Noted? हमने यहाँ लिखा है, even this is applicable in the scientific field also. Max Planck was being advised by his teacher not to take physics for his higher studies, as almost everything has been discovered and invented in physics. But Planck replied that he wanted to pursue physics because he is having great love for his subject, and after a few years he brought a new revolution in this subject when he introduced quantum physics because he knew himself and his passion for physics. Clear? बताइए. If Planck could have listened to his teacher and not taken physics as a higher study, could quantum physics have been discovered? If Planck could have listened, if Planck could have listened to his teacher and not taken physics, could quantum physics was being discovered? Could quantum physics was discovered by him? Could quantum physics discovered by him? Simply no. Simply no. ठीक है, क्लियर? जल्दी से नोट कीजिए आप लोग. यहां लिख सकते हैं, not only scientific field, not only scientific field, but climate change
can also be regulated, and its adversity can be controlled, and its adversity can be controlled if proper knowledge regarding environment reaches to the people, reaches to the people। जल्दी से लिखिए, हम लोग ऐसे को एंड करने वाले हैं। वी हैव कवर्ड ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट। सो हमने लिखा है यहाँ पे नॉट ओनली साइंटिफिक फील्ड बट ऑल्सो क्लाइमेट चेंज कैन also be regulated and its adversity can be controlled if proper knowledge regarding environment reaches to the people। ठीक है, जल्दी से कीजिए। गीता थनबर्ग की बात करें। गीता थनबर्ग at the age of 17 years only, she have realized the importance of climate change, and because of this attitude in the international conference she have directly conveyed how dare the people can destroy the environment, because उसको पता था, ठीक है ना, बी को पता था, and is presently is known as young environmentalist। ठीक है, गीता थनबर्ग की बात करेंगे। गीता थनबर्ग at an age of 17 years, ग्रेटा थनबर्ग at an age of 17 years have realized the importance of climate and how anthropogenic factors are contributing towards climate change, in an international conference, in an international conference, she directly started the speech how dare you, and now she is a young environmentalist, ठीक है, क्लियर। ओके, क्लियर। सो I'd like to end the essay। हम essay को एंड करना चाहेंगे। The world presently is surrounded by the world presently is surrounded by lots of problem, climate change, terrorism, money laundering, cyber security issue. The only
solution lies in the only solution lies in generating skilled manpower, proper regulations, strict surveillance, but such things only will happen if you are quite aware of the problem. If one is quite aware of the problem and know its strength and weakness, so that one can start working on the weakness side. ठीक है, जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे, जल्दी से सभी लोग नोट डाउन करें। हमने यहाँ पे लिखा हुआ है द वर्ल्ड प्रेजेंटली इज सराउंडेड बाय लॉट ऑफ प्रॉब्लम, climate change, terrorism, money laundering, cyber security issue, etc. The only solution lies in generating skilled manpower, proper regulation, strict surveillance, but something only will happen if one is quite aware of the problem and know its strength, weakness, so that one can start working on the weakness side. ठीक है, सो अरिस्टोटल यहाँ लिख सकते हैं, अरिस्टोटल राइटली कोटेड, आप लिख सकते हैं, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। अरिस्टोटल राइटली कोटेड, नोइंग वनसेल्फ इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम एंड दिस विजडम इज गोइंग टू रिजॉल्व ऑल द क्राइसिस दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड। ठीक है, सर लिख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में अरिस्टोटल राइटली कोटेड, अरिस्टोटल rightly quoted, knowing oneself is the beginning of wisdom, and this wisdom provides the solution for every crisis. This wisdom provides solution to every crisis. ठीक है, is it clear? जल्दी से बताएं, क्लियर है? नोटेड? Kindly let me know, आप सभी लोगों ने नोट डाउन कर लिया? So this is how you can represent an essay. I don't know how हम जो है कितना वर्ड्स लिखे हैं, बट अगर essay की बात करते हैं तो जो essay पेपर होते हैं वहां पे अगर रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करें तो वहां पे लिखा होता है कि essay आपका 1000 वर्ड से लेकर 1200 वर्ड तक होना चाहिए। ठीक है ना, मतलब आपका essay अगर आप बात 1000 से लेकर 980 से लेकर जो है आपका 1300-1400 तक जा सकता है। लेकिन हमें परफेक्ट स्ट्रेटेजी के तौर पे कोशिश करना थी कि एसे को या तो हम 1000 में एंड कर दें या 1100-1150 वर्ड में एंड कर दें। हमें ज्यादा एक्सीड करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ज्यादा एक्सीड करते हैं तो क्या होता है, वर्ड्स तो आपके चले जाते हैं, उस वर्ड्स को आप दूसरे एसे में कंप्लीट, क्योंकि टाइम कॉन्स्टेंट भी होता है ना, तो जल्दी से बताइए, आप लोगों ने ऐसे लिख लिया है? सभी लोगों ने ऐसे लिख लिया? नोटेड? तो चलिए, थैंक्स अ लॉट एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।